हिमालय की इन चोटियों में दूर दूर तक फैले विशाल और खूबसूरत बर्फ की चादर ही नहीं है, बल्कि एक अनमोल खजाना भी है। गंभीर लाइलाज बीमारियों को ठीक करने वाले औषधीय गुणों से भरपूर पेड़ पौधे, हर्ब्स, जड़ी बूटियों का बेशकीमती खजाना। भगवान बुद्ध के चिकित्सा ज्ञान और इन्हीं अनमोल जड़ी बूटियों के खजाने से करीब 2500 वर्षों में हिमालय क्षेत्र में विकसित हुई है एक अनोखी और बेहद कामयाब चिकित्सा पद्धति सोवा रिपा। भारत में अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, दार्जिलिंग से लेकर लाहौल स्पीति और लद्दाख तक और विदेशों में नेपाल, भूटान, तिब्बत तक फैले इस अनोखी चिकित्सा पद्धति सोवा रिपा के बेहतरीन नतीजे मिल रहे हैं। गंभीर बीमारियां खत्म हो रही हैं, लोग रोगों से मुक्ति पा रहे हैं। हिमालय क्षेत्र की इस बेहतरीन पारंपरिक चिकित्सा पद्धति सोवा रिपा का फायदा आपको भी मिले, आपको भी कठिन रोगों से मुक्ति मिल जाए। इसलिए कार्यक्रम शराब सैंगपुर लेकर आया है एक विशेष सीरीज, जिसमें आपको मिलेगी सोवा रिपा चिकित्सा पद्धति से जुड़ी वो तमाम जानकारियां जो आप जानना चाहते हैं। तो देखिए हिमालय क्षेत्र की चिकित्सा पद्धति सोवा रिपा का चमत्कार। दुनिया की बेहतरीन पारंपरिक चिकित्सा पद्धतियों में से एक सोवा रिपा चिकित्सा पद्धति के बारे में आपने ये जान लिया है। इसका सिद्धांत बीमारियों को दबाने का नहीं, बल्कि जड़ से खत्म करने का है। और सोवा रिपा चिकित्सा पद्धति में बीमारियां दूर करने के लिए हर्ब्स और मिनरल्स जैसी उन्हीं प्राकृतिक तत्वों का इस्तेमाल किया जाता है जिनसे हमारा आपका शरीर बना है। आज आप जानेंगे कि सोवा रिपा चिकित्सा पद्धति में कैसे की जाती है रोगों की पहचान और कैसे शुरू होता है इलाज। कई हजार वर्षों के अध्ययन और अनुभव से मिली जानकारियों के आधार पर सोवा रिपा चिकित्सा पद्धति का ये मानना है कि ये शरीर 5 तत्वों से बना है। सा यानी पृथ्वी, जिससे मांसपेशियों की कोशिकाएं, हड्डी, नाक, कान, सूंघने की शक्ति मिलती है। चू यानी जल, जिनसे खून, शरीर में मौजूद द्रव्य, जीभ और सूंघने की क्षमता हासिल होती है। में यानी अग्नि, जो शरीर को तापमान, आंखों को रोशनी और शरीर को रंग देता है। लुंग यानी वायु, जिससे सांसें चलती है और छूकर महसूस करने की ताकत मिलती है। और नामखा यानी खाली जगह, जैसे शरीर में बनी कैविटीज, कान का ड्रम, सूंघने की शक्ति आदि। सोवा रिपा चिकित्सा पद्धति के मुताबिक जब शरीर के इन सभी तत्वों का बैलेंस बिगड़ता है तो पैदा होती हैं बीमारियां, और बैलेंस बिगड़ने की वजह है लाइफस्टाइल यानी जीवन जीने के तरीके में और खाने पीने में बड़ी गड़बड़ी। You have a bad habit of having wrong food and a wrong lifestyle, which are the basic cause of the disease. Tibetan medicine is based on natural things, and we believe that our body is made with the 5 elements. In the same way, the disease are nothing but the imbalance of the bodily elements. तत्वों का बैलेंस बिगड़ते ही शरीर में परिवर्तन शुरू हो जाता है और मिलने लगते हैं बीमारियों के लक्षण। और सोवा रिपा चिकित्सा पद्धति के विद्वान 3 तरीकों से कर लेते हैं बीमारियों की पहचान। पहला तरीका है मरीज की हालत, त्वचा, नाखून और चेहरे की रंगत, थूक, पेशाब और जीभ की जांच कर। Seeing or the visual, and you can see, many things. You can read the person who is suffering from different diseases, and you can see the complexion of the patient. You can see the behavior of the patient. From this, you can get a lot of information. And the most important thing we do in Tibetan medicine is we check the tongue of the patient, because tongue is a very good reflector. You can see the reflection from the abdomen through the tongue. Like examined by touch means you can touch the patient's body, even by the roughness or smoothness of the, like you can say, skin can give you a lot of information. And hot and cold, you can say
temperature of the bodily heat can also give you informations. बीमारी की पहचान का दूसरा तरीका है छूकर यानी पल्स की जांच कर। When the person is healthy, you have a general kind of pulse, and when person is suffering from different diseases, you have different types of pulsations. So what is the basic cause of changes in the pulsation can prove that the pulse reading is logical and scientific. और बीमारियों की पहचान का तीसरा तरीका है मरीज से पूछताछ। The questioning is normally, everybody does the questionings on the basis of the symptom, but there are three ways to question the question about the disease. That is what we call the past, present, and future. बीमारी की पहचान होने पर सोआरिपा चिकित्सा पद्धति के जानकार मरीजों का इलाज शुरू करते हैं और हर्ब्स, मिनरल्स जैसी प्राकृतिक चीजों के अलावा थेरेपी से भी बीमारियां दूर भगाते हैं। Even though we have a medicine prepared from gems and precious minerals and metals, and since Tibet is very abundant with all these plants and herbs, there's a saying that if you step two, you can get 4 plants in Tibet. So like this way, our medicines are basically based on herbs. आखिर कैसी होती है सोआरिपा चिकित्सा पद्धति में इस्तेमाल होने वाली दवाइयां और किन थेरेपीज से हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर दी जाती हैं गंभीर से गंभीर खतरनाक बीमारियां, देखेंगे अगले एपिसोड में। कैसे दूर हो आपके जीवन की मुश्किलें, कैसे सवरे आपका करियर, कैसे सफल हो आपका हर काम, क्या कहते हैं आपकी किस्मत के सितारे, जानिए सटीक होने वाली बौद्ध भविष्यवाणियां बौद्ध ज्योतिष शास्त्री सेरिंग छांजुम से। Tashidele, Namaskar, 16 July 2010, 5th day of the 6th lunar month, Friday, which is a favorable day for the person born in the year of sheep, bird, monkey, horse and snake, while unfavorable for those born in the year of tiger and rabbit. This whole day carries an elemental combination of earth and fire, which is considered inauspicious, and the combination of such elements has burning energy to generate suffering. And this day is advised not to have any feast with relatives. 17 July 2010, 6th day of the 6th lunar month, Saturday, a favorable day for the ox, tiger and rabbit born year, while inauspicious day for the person born in the year of mouse and pig. And this whole day carries an inauspicious elemental combination of earth and wind. So during this day, general routine work can be carried out, while any kind of important and major decision making and starting of new projects, etc., better be avoided during this particular day. And no laying of foundation, renovating and moving of houses on this same day as well. 18 July 2010, 7th day of the 6th lunar month, Sunday, a favorable day for the person born in the year of dragon. And this whole day carries an elemental combination of fire and wind, which is considered very auspicious. And this elemental combination has especially a sort of powerful energy to bring auspiciousness. But in terms of building of houses or laying of foundation,
it is suggested to avoid on this particular day, and no engagement and wedding ceremony should also be held on this particular day, especially until 10 a.m. See you tomorrow at the same time. क्या है भगवान बुद्ध का दर्शन? बौद्ध धर्म का गूढ़ ज्ञान। कैसे मिले दुख से मुक्ति? कैसे पाए बुद्धत्व? क्या है धम्मम? क्या है संघम? ये कार्यक्रम आपको हर रोज दे रहा है ऐसे तमाम सवालों के जवाब। आज बौद्ध धर्म के प्रकांड विद्वान परम पावन दलाई लामा से जानिए भगवान बुद्ध का दर्शन और बौद्ध धर्म का सही ज्ञान। Yeah, mention women. So Men are more competitive. Men are more competitive. So that's why they have a man on there, I guess. Like that. So they are reaching Shigividi. So now, for example, some of these, I think, very subtle sort of point, which Nagarjuna really made very, very clear sort of statement or explanation. And then also, some cases, so some sort of argument, what are called Mahayana, not true teaching of Buddha. And particularly, there is no Buddhist Tantrayana. So, Nagarjuna accepted, of course, Mahayana text, like Panchaparamita text is true Buddhist teaching. Nagarjuna accepted that. And some of their great Madhyamika philosophers' texts, many quotation of Mahayana text. So they consider these are true Buddha's own sort of statement or speech. So then also is Nagarjuna and Arindava and Chandrakirti, these made sort of very wonderful text about Buddhist Tantrayana. So then, usually my argument is, firstly, Nagarjuna, Indian, and only after 400 years, after Buddha, 400 years. So he should have better knowledge about India than Western scholars. Western scholars, after 2,500 years, you see, they guess about Buddha, whether you see taught Mahayana or not, or whether there is Buddhist Tantrayana or not. I think Nagarjuna should know better. Then thirdly, then another reason, Nagarjuna, a monk, good monk, not a liar. And he must tell truth. And then also Nagarjuna, not a dull person. Is some kind of blind faith sort of person. Or then, sometimes even it's difficult to distinguish dreams and reality. Sometimes my own case was something many years ago, something happened. Then the second thought, at that time I dreamt all the reality. So at one point, I started wondering whether what I could remember, whether what I could recall is what really happened or there was a part of my dream. At that time, that. So Nagarjuna, not that kind of person. His mind is very sharp. And even he, you see, not accept some Buddha's own word if there is some sort of
contradiction. Through analytical and through investigation, if he found contradiction, then he not accept even Buddha's own sort of words. So such person, very sharp mind, very logical mind, right? And good monk. So on these basis, then I believe Nagarjuna's statement is quite reliable. Through that way, I accept what Nagarjuna says. So I prefer I prefer Nagarjuna than Western some of the scholars. Oh, that's like that. So one occasion in Delhi, one meeting, whether you see these Mahayana text, whether you see Buddha taught or not. So I put this argument like that. So I really feel. So among Chinese, some Chinese in Taiwan as well as in mainland China, believe Tibetan Buddhism is distorted Buddhism. Some, even some sort of books also is there. Recently, last year, when I was in Taiwan, there were some demonstrations. Actually, they mentioned Dalai Lama not carrying two teaching of Buddha. So later, of course, in newspaper, mentioned that these people are some part of gangsters, some manipulated by pro-Chinese communists. Right? So, but in any way, they showing their disagree what Tibetan Buddhism, what I carry, Tibetan Buddhism, like that. So these are lack of contact and lack of understanding, like that. So in such case, I think thorough study about Guhi Samanza and the clear presentation and with sort of history, brief history of Nagarjuna, Aryadeva, and then Chandrakirti. I think latest or another sort of, I think, effective sort of the fact is, I think 11th century, Atishan Dibamgara came to Tibet. And in his writing, refer quite a number of highest tantric teaching. Choyokara, Chunjukjasa, Zunarolia, Monkuch, Pejok or the Monkustoa. And Lamjun Kasa. Bodhipat Pratip. In there also he mentioned about highest Tantra Yoga, like that. So it is quite true. And then I think some brief mention, I think tomorrow morning I will tell you something.